Hello everyone, good evening guys, and welcome to the YouTube channel of Pratham Test Prep. Myself Joy Sharma, and here we are with yet another current affairs session of the series Current Affairs Samvad, right? So you all know that we do have this particular series which is known as Current Affairs Samvad, which we do on every Monday and Friday at 8:30 p.m. right? Every Monday and Friday at 8:30 p.m. we do this particular series called Current Affairs Samvad. Now in this particular series, what you will find is you will find some really important current affairs, the current affairs which are supremely important from your entrance point of view and very, very important from the undergraduate entrance point of view, be it CUET, be it any other entrance exam, right? So we are going to cover these type of current affairs over here. Now apart from that, if you're new to this channel, hi, my name is Joy, and you can take a moment, subscribe to Pratham Test Prep's channel if you haven't done already, and give this video a thumbs up. It actually motivates all of us, and we go live and we do such videos for your benefit. Alright, now if you are a newspaper enthusiast, we do have newspaper analysis sessions which go live on every Monday to Friday at 11:30 am, right? We have Legal Darpan series as well. We have vocab booster too, which will help you in boosting your vocabulary, right? So we do have all such sessions which we do on Pratham Test Prep's YouTube channel. Now for this, we have this current affairs video which will cover the current affairs from the 13th to the 16th of Feb. Alright, now let's quickly see the first news of the day, but before that, let's see what is the quote for the day. The quote for the day is, education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. So this is why we all say that education is important, and this is a quote which is given by Malcolm 10. Right, now let's quickly see the first news. We have World Radio Day. Very, very important if you are giving your undergraduate entrances, and where general awareness in current affairs is a part of that. Apart from that, this is supremely important if you are giving the mass comm entrances too. If you are giving the mass communication entrances to, like for BJMC, if you are giving such type of entrances, this particular day is very, very important. See, the point is they will ask you questions basis the entrance you're preparing for, right? Whatever the type of entrance you're preparing for, they will ask you questions on the basis of that only, right? So or related to that. Okay, so World Radio Day, World Television Day, World Press Freedom Day, such type of the days are very, very important if we are talking about if we're talking about the mass comm entrances. We have a question from Saksham. Ma'am, how many GSA questions are expected in CUET general test? So as of now, what we have is in the CUET general test, we are expecting somewhere around 30 questions from the general awareness, current affairs, or miscellaneous kind of miscellaneous kind of questions. We are expecting somewhere around 30, right, Saksham? I hope it is clear to you, right? And these current affairs, these will not only be current affairs. Good evening, Ananya. These will not only be current affairs, these will be the questions, the static questions related to the current news, right? So we have this particular day, World Radio Day, which is observed on the 13th of February, and it is an annual event which is which is observed annually. It is an annual event. क्यों observe होता है? Basically to spread awareness about radio, right? Radio ने ही लोगों को up to date रखा about the news, क्या क्या चल रहा है, about what is happening around the world. Radio has kept people updated. So about radio, to spread awareness about the importance of radio, we have this World Radio Day which is observed. Okay, now we have this one particular organization which I always say, that is the UNESCO, United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization, and this is the only cultural organization of the UN. Right, as I always told you, this is UNESCO is the only cultural organization of the UN, right? So UNESCO on September
2010, the Spanish Radio Academy, it has requested UNESCO, since it is the only cultural organization, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि रेडियो का सिग्निफिकेंस पूरे वर्ल्ड में अगर हमें बढ़ाना है, सो वी नीड टू आइडेंटिफाई और वी नीड टू मार्क अ डे विच इज स्पेसिफिकली फॉर रेडियो, एंड देन दे ऑब्जर्व 13th of February एज द वर्ल्ड रेडियो डे, राइट. रेडियो पे क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग होती है कम्युनिटी इवेंट्स की, अवार्ड्स की, डिबेट्स की, अलग अलग रेडियो स्टेशन पे. Right, so World Radio Day is honored not only to honor radio but to honor all such broadcasts which are happening. And as we know that for every day we have two things which are important. We have the date and we have the theme, which is extremely important, and that is the reason why theme क्या है World Radio Day का. The theme is Radio and Peace. That is the theme. Right, it highlights the role of radio, encouraging more peace in the country, avoiding conflicts. This is how World Radio Day is important, and this is what the theme of World Radio Day is: radio and peace. Moving further, we have Prime Minister Narendra Modi inaugurated Aero India 2023. Now, Aero India का basically Aero India क्या है? Aero India is the Aero show, right? It is Asia's largest aero show. So Prime Minister Modi ने एशिया का जो लार्जेस्ट एरो शो है उसको इनॉग्रेट करा. उसका 14th एडिशन जो था उसको उन्होंने इनॉग्रेट करा. कहाँ पे उन्होंने इनॉग्रेट किया? ही इनॉग्रेटेड इट इन बेंगलुरु, राइट. जो शो है पूरा एरो शो, उसमें वी नो दैट अभी हम अगर ड्रोन्स की भी बात करते हैं तो देयर द ड्रोन सेक्टर इज बूमिंग अ लॉट. उसके अलावा अगर आपने देखा होगा कि इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ क्या कर रहा है, टाइप्स कर रहा है, राइट. इवन कंट्रीज के साथ तो वो टाइप्स कर रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट क्या हो रहा है ना कि वी आर एक्चुअली मेकिंग आवर ओन इंडिजिनस एयर systems too, right? We have Prachand, we have then again we have the light utility helicopters, right? We have light combat aircraft also, which is known as Tejas. So we have all such of helicopters. So what is there in Aero Show? Aero Show is the largest aero show of Asia, and this year it was the 14th edition. जो मोदी जी ने क्या किया था, मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था बेंगलुरु में, राइट. इसमें क्या होगा, नॉट ओनली the equipments that we have, but also the tools, the technologies, and also the international businesses which are opening up for India in this particular sector. All these things were a part of that. So what is the theme? The theme is the runway to a billion opportunities. This is what the theme is, runway to a billion opportunities. And in this, 809 companies participated, and these companies were from 98 countries who took part in the Aero India show, which is the largest show of Asia. And as I've told you that to promote the export of indigenous aircrafts, right, air platforms, we have done this particular show, and this particular show this year focused on all these things, right, to promote LCH, which is light combat helicopter, Tejas, right, which is another light combat aircraft, then Dronier light utility helicopter, HTT-40. So we have all such aircrafts which we are promoting in order to export the indigenous air technologies or the indigenous air tools that India is making, right? Now all these things are being made under Made in India policy, completely Make in India है, right? And उसके साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए, आपको थीम जरूर पता होना चाहिए, which is runway to a billion opportunities. Moving further to the next news, we have Indian Army gets World Cup first fully operational swarm drone system, right? इंडियन आर्मी ने एक पूरा वर्ल्ड का फर्स्ट फुली ऑपरेशनल, इससे पहले अगर हम ड्रोन्स की बात करें, किसी भी आर्मी के पास, किसी भी कंट्री के पास ऐसा फुली ऑपरेशनल कोई ड्रोन सिस्टम नहीं था. बट नाउ इंडियन आर्मी जो है उसके पास कंप्लीटली एक ऑपरेशनल स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम है. स्वॉर्म इज द नेम ऑफ द ड्रोन सिस्टम, राइट. नाउ ये एक बेंगलोर का स्टार्टअप है विच इज नोन एज न्यू स्पेस, एंड उनके अकॉर्डिंग व्हाट दे हैव सेड इज दैट इंडियन आर्मी हैज बिकम द फर्स्ट मेजर आर्म फोर्स इन द वर्ल्ड जिसके पास पूरा का पूरा ये स्वार्म बेस्ड ड्रोन सिस्टम है, राइट. उसके साथ साथ
Swarming क्यों? Because it is unmanned, right? ये आपका UAS which is unmanned aerial system, कोई human is not involved. It is the completely technological based, right? And it will be inducted in military operations. It will be inducted in more military operations which the country will do in future. And even there is 100 domes swarm, right? In this particular swarm there are 100 domes where they can target up to 50 kilometers, right? अभी तक हमें क्या लगता था? अभी तक हमें ये लगता था कि जो ड्रोन सिस्टम है या जो ड्रोन है उसका रेंज उतना ज़्यादा नहीं है, बट जो आपका ये वाला जो स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम है वो 50 किलोमीटर्स तक जा सकता है, एनिमी की टेरिटरी तक वो जा सकता है. एंड इवन ये जो है मेड इन इंडिया है, कम्प्लीटली आपका इंडिया में बना हुआ है. एंड वी हैव गॉन फार अहेड विद व्हाट? विद द टॉप nations of the top growing nations of the world. So as you have seen कि पहला fully operational swarm drone system Indian Army ने अपना कर दिया. All right. Moving further, we have India's first electric AC double-decker bus inaugurated in Mumbai. Yes, मुंबई में इंडिया का पहला AC double-decker bus, इंडिया का फर्स्ट AC डबल डेकर बस जो है वो इनॉग्रेट हुआ है मुंबई में, राइट? मुंबई में जो BEST है विच इज़ बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, उन्होंने इनॉग्रेट करा है कंट्री का पहला एयर कंडीशन डबल डेकर बस. नाउ उसके साथ साथ 200 मोर ऑर्डर्स भी प्लेस हुए हैं ऑफ सच बसेस. एंड जो आपका स्विच मोबिलिटी है, स्विच मोबिलिटी क्या है? आपने अशोक लेलैंड के बारे में सुना होगा, राइट? अशोक लेलैंड इज अ मेजर कंपनी, ठीक है, जो आपके बसेस को ये मैन्युफैक्चर करिए. उसी की एक सब्सिडरी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, स्विस मोबिलिटी. दैट पर्टिकुलर थिंग इज रिलेटेड टू दीज टू दीज फर्स्ट AC डबल डेकर बस, राइट? ये अभी के लिए जो बसेस हैं वो आपकी चलेगी फ्रॉम द कोला बस डिपो टू द बांद्रा कोला कॉम्प्लेक्स विच इज BKC. वहां से लेकर आपकी ये बस चलेगी. सीटिंग कैपेसिटी 73 है. उसके अलावा अगर आपको याद होगा, हमने जब अगस्त में करंट अफेयर्स करे थे एंड इवन जब हमने अक्टूबर में भी आई गेस करंट अफेयर्स करे थे, उस टाइम पर भी हमने समथिंग एक सिमिलर न्यूज वी हैव डिस्कस्ड. जो क्या वो न्यूज थी कि अगस्त में जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है मिस्टर नितिन गडकरी, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक प्रोटोटाइप इस बस का, इस ई बस का उन्होंने क्या किया था? एक प्रोटोटाइप अनवेल किया था. एंड उन्होंने बोला था कि आफ्टर ऑल द रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन एंड ऑल दीज विल कम ऑन रोड्स, राइट? बट नाउ ये पूरी इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बसेस हैव बीन इनॉग्रेटेड. मुंबई में इनॉग्रेटेड हुआ है. सीटिंग कैपेसिटी इज ऑफ 73 people. Now, another very, very important news we have. AIIMS Delhi has been named as Center for Excellence for Artificial Intelligence in Healthcare. Right? So, हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है मनसुख मांडविया, उन्होंने क्या इन्फॉर्म करा? उन्होंने ये बताया कि जो एम्स है, एम्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. एम्स जो न्यू दिल्ली है, इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज क्या? एज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर. मतलब अब आर्टिफिशियल टूल्स, राइट, ये सारी चीजें भी आएंगी इन इन डिसीज डिटेक्शन, अर्ली साइंस पता चल जाएंगे ऑफ सर्टेन डिसीजेस, राइट? कंप्लीट सर्वेलेंस रखा जा सकेगा ऑन हाउ द परफॉर्मेंस ऑफ अ पेशेंट इज. कंप्लीटली डेवलप्ड क्लिनिकल डिविजन होगा आपका इन द सिस्टम, राइट? क्वालिटी केयर आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा. सो दिस इज व्हाट एम्स दिल्ली हैज बीन नेम्ड एज. दिस इज अ डेफिनेशन व्हिच हैज बीन गिवन, राइट? नाउ जितने भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस एंड फ्रॉड्स है, राइट, द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इट्स बेसिकली जो हमारा आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत की जो एक जन आरोग्य योजना है, उसमें भी आपकी AI टेक्नोलॉजीज अब यूज होने लगेंगी, जिससे क्या होगा? जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं जो सस्पिशियस होते हैं, जो पोटेंशियल फ्रॉड्स होते हैं कि अच्छा ये फ्रॉड हो सकता है, वो भी अब रोका जाएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट हैज बीन डन विद एम्स दिल्ली. मैम, फॉर प्रीवियस न्यूज वी ओनली नीड टू लर्न capacity. Saksham, you're talking about which news? Could you please specify it, beta? Could you please specify? Good evening, Ananya. Could you please specify that which news are you talking about? Right. So this was about AIIMS Delhi, and I hope you have written
all the important pointers that you have in this. आपने सारे के सारे important pointers लिख लिए होंगे, right? Electric buses, yes, the electric buses, you just need to know the capacity. Moving on to the last news of the day, we have a sports related news. ये सब आपको I think पता चल गई होगी बहुत अच्छे से, that Smriti Mandhana has become the most expensive player of WPL auctions. हमें पता है इस साल से हमारे Women Premier Leagues भी हो रहे हैं, WPL which is Women Premier Leagues. Smriti Mandhana, who is a cricketer, she is an opener, right? उनको लिया गया है कितने में 3.4 crores and she has been शी इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर जिसको ऑक्शन में चूज़ किया गया है. कौन सी टीम ने चूज़ किया गया है? बेंगलोर ने, आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने क्या किया है आपका स्मृति मंदाना को लिया है इन 3.4 crores, राइट. उसके बाद आपकी Harmanpreet Kaur hai, she has been sold to Mumbai Indians of 1.8 crores, right. Apart from that, we have some international cricketers as well, like we have Ashley Gardner from Australia, जिनका सबसे बड़ी bidding लगी थी गुजरात जायंट्स ने लगाई थी. 3.2 crores में उनको लिया गया है. इवन जो इंग्लैंड की नैटाली स्कीवर हैं उनको लिया है मुंबई इंडियंस ने इन 3.2 crores. दीप्ति शर्मा को जो यूपी की टीम है, यूपी वॉरियर्स, उन्होंने लिया है इन 2.6 crores. So you don't have to necessarily learn or to note down कि किसको कितने crores में लिया गया है इन the auction, but what you can do is आपको टीम्स पता होनी चाहिए, उसके साथ साथ मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, जैसे हम नॉर्मल आईपीएल में हम देखते हैं कि सबसे एक्सपेंसिव कौन सा प्लेयर क्या, लाइकवाइज यहाँ पे भी हमें पता होना चाहिए, राइट. नाउ अगर हम बात करते हैं कि 2 crore का मार्क, मतलब बियॉन्ड 2 crores किस किस विमेन क्रिकेटर को ऑक्शन में दिया गया है. सो देयर वर 6 विमेन क्रिकेटर्स जिनको बियॉन्ड 2 crore का मार्क दिया गया है. एंड हर WPL टीम के पास, हर विमेन प्रीमियर लीग के पास एक मैक्स कैप दे रखी है. कैप उनको जो दे रखा है दैट इज ऑफ 12 crores. तो हर किसी के पास जो 12 crore का मैक्स कैप है उसी में वो अपने सारे प्लेयर्स खरीद सकते हैं, राइट. दिस इज द कैप विच दे हैव बीन given. I hope these news are clear to all of you. Thank you so much guys for staying tuned. Subscribe to Pratham Test Prep's channel if you haven't done already, right, because trust me, you will learn a lot, you will understand a lot about how you need to prepare for your entrances or what kind of news are important. Now apart from that, if you are somebody who is slightly confused about the entrance exam dates, about the form filling videos, कि about form filling कि कौन कौन से फॉर्म्स रिलीज हो गए हैं, क्या लास्ट डेट है, एग्जाम कब है, अगर आपको वो सब जानना है, या फिर अगर आपको पेपर पैटर्न जानना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू वांट टू नो द पेपर पैटर्न ऑल्सो, यू कैन subscribe to Pratham Test Prep's YouTube channel. And apart from that, what you can do is you can even follow our Instagram page, right, because there we do upload short videos on the paper pattern, form updates and other interesting updates about CUET and all such things. So you can even have a look at that. Make sure to follow the page because we will keep on posting such kind of content for you, which will eventually help you in understanding a paper better, in preparing for the paper in a better manner. Thank you so much guys, and I shall be meeting you super soon on Monday. Till then, take care, bye bye, good luck, and this is Julie Sharma signing off.